हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आइटम नंबर 1 श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, आप बैठ जाए। माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्य प्लीज, प्लीज माननीय सदस्य प्लीज। धन्यवाद जी। ऑनरेबल आपको बोलने का मौका दूंगा बजट के बाद। माननीय वित्त मंत्री जी। ऑनरेबल स्पीकर, I present the budget for the year 2021-2022. As introduction, Honorable Speaker, the preparation of this budget was undertaken in circumstances like never before. We knew of calamities that have affected a country or a region within a country. But what we have endured with COVID-19 through 2020 is sui generis. When I presented the budget 2020-2021, we could not have imagined that the global economy, already in throes of a slowdown, would be pushed into an unprecedented contraction. We could not have also imagined then that our people, as those in other countries, would have to endure the loss of near and dear ones and suffer hardships brought about due to a health crisis. The risk of not having a lockdown was far too high. Within 48 hours of declaring a 3-week-long complete lockdown, the Prime Minister announced the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, valued at 2.76 lakh crores, that provided free food grain to 800 million people, free cooking gas for 80 million families per month, and cash directly to over 400 million farmers, women, elderly, the poor and the needy. Even as a large section of citizens stayed home, milk, vegetables, fruit suppliers, health and sanitary workers, truck drivers, railways and public transport workers, bank employees, electricity workers, our annadatas, police, firemen and the armed forces all had to go about their work as normal, but with the additional anxiety of the virus hanging over them. We recognize this, and I think I speak on behalf of everybody in this august house when I express my heartfelt gratitude to these men and women for how they were able to carry out their work and duty to provide for the nation's basics over those crucial months. Speaker, sir, for public good, honorable members of parliament and members of legislative assemblies too offered their salaries. In May 2020, the government announced the Atmanirbhar Bharat package. To sustain the recovery further into the year, we also rolled out 2 more Atmanirbhar packages, 2 and 3. Total financial impact of all the Atmanirbhar Bharat packages, including measures taken by the RBI, was estimated to be about 27.1 lakh crores, which amounts to more than 13% of our GDP. As a government, we kept a watch on the situation and were proactive in our responses. The government, led by the Prime Minister, stretched its resources to deliver for most vulnerable sections of our society, the poorest of the poor, the Dalits, the tribals, the elderly, the migrant workers and our children. The Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, the 3 Atmanirbhar packages and announcements made later were like 5 mini budgets in themselves. The Atmanirbhar packages accelerated our pace of structural reforms, redefinition of MSMEs, commercialization of the mining sector, agriculture and labor reforms, privatization of public sector undertakings, one nation, one ration card, production-linked incentive schemes are some of the notable reforms carried out during this period.
Faceless income tax assessment, DBT, and financial inclusion are the others. Today, India has 2 vaccines available and has begun immediately safeguarding not only her own citizens against COVID-19, but also those of 100 or more countries. It is added comfort to know that 2 or more vaccines are also expected soon. Honorable Prime Minister launched the vaccination drive by crediting and thanking our scientists. We are ever grateful for the strength and rigor of their efforts. Having said that, we are all reminded time and again that our fight against COVID-19 continues into 2021. Now, just as it happened after the 2 world wars, there are signs that the political, economic, and strategic relations in the post-COVID world are changing. This moment in history is the dawn of a new era, one in which India is well poised to truly be the land of promise and hope. I borrow the words of Rabindranath Tagore. Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark. Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark. In this spirit, I can't help but recall the joy that we as cricket-loving nation felt after the Team India's recent spectacular success in Australia. It has reminded us of all the qualities that we as a people, particularly our youth, epitomize, of having abundant promise and the unsuppressed thirst to perform and to succeed. Today, data shows that India now has one of the lowest death rate of 112 per million population and one of the lowest active cases of about 130 per million. This has laid the foundation to the revival we are seeing now in the economy. This budget will be the first of this new decade. This budget will also be a digital budget, and that has happened with all your support. So far, only 3 times has a budget followed a contraction in the economy. All such contractions earlier were as a result of situations typical to India. This time, the contraction in our economy is due to a global pandemic, just like in several other countries. Having said that, I want to confidently state that our government is fully prepared to support and facilitate the economy's reset. This budget वित्त मंत्री provides निर्मला सीतारमण every लगातार opportunity for our कोविड-19 economy to के raise समय and का capture जिक्र the कर रही pace हैं और that बता it रही है कि needs किस तरीके to, से मोदी सरकार जो है that it तैयार है needs for a इस sustainable पैंडेमिक growth. की वजह से जो स्थितियां खड़ी हुई हैं उनसे निपटने के 2021 लिए is the year of many important milestones for our history. I mention a few of these. It is the 75th year of independence, 60 years of Goa's accession to India, 50 years of the 1971 India-Pakistan war. It will be the year of the 8th census of independent India. It will also be India's turn at the BRICS presidency, the year for our Chandrayaan-3 mission, and the Haridwar Mahakumbh. Honorable Speaker, before I commence Part A of the budget, I want to take a moment to acknowledge how isolating and distancing seemed like insurmountable challenges for a country like ours that has people coming together in times of crisis. It hurts us in many ways. It hurt us in many ways. I bow my head in respect to every citizen for the endurance shown in facing what was an undeniably a tough year for all our physical and mental well-being. Part A. In Part A, I wish to lay a vision for Atmanirbhar Bharat. Atmanirbhar Bharat or Atmanirbharta is not a new idea. Ancient India was largely self-reliant and equally a business epicenter of the world. Atmanirbhar Bharat
is an expression of the 130 crore Indians who have full confidence in their capabilities and skills. We are already part of international groupings such as the G20 and the BRICS, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, and the International Solar Alliance are realities today due to India's efforts. The proposals in Part A will further strengthen the sankalp of nation first, doubling farmers' income, strong infrastructure, healthy India, good governance, opportunities for youth, education for all, women empowerment, and inclusive development, among others. Additionally, also on the path to fast implementation are the 13 promises we had made in the budget of 2015-16, which were to materialize during the Amrit Mahotsav of 2022 on the 75th year of our independence. They too resonate with the vision of Atmanirbharta. The budget proposals for 21-22 rest on 6 pillars: health and well-being, physical and financial capital and infrastructure, inclusive development for aspirational India, reinvigorating human capital, innovation and R&D, and as 6th, minimum government and maximum governance. I now move to talking about the first pillar, health and well-being. Even at the outset, I would like to say that the investment on health infrastructure in this budget has increased substantially. Progressively, as institutions absorb more, we shall commit more. Taking a holistic approach to health, we focus on strengthening 3 areas: preventive, curative, and well-being. Health systems. A new centrally sponsored scheme, PM Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana, will be launched with an outlay of about 64,180 crores over 6 years. This will develop capacities of primary, secondary, and tertiary care health systems, strengthen existing national institutions, and create new institutions to cater to detection and cure of new and emerging diseases. This will be in addition to the National Health Mission. The main interventions under the scheme are support for over 17,000 rural and 11,000 urban health and wellness centers, setting up integrated public health labs in all districts, and 3,382 block public health units in 11 states, establishing critical care hospital blocks in 602 districts and 12 central institutions, strengthening of National Center for Disease Control, its 5 regional branches and 20 metropolitan health surveillance units, expansion of the integrated health information portal to all states and UTs to connect all public health labs, operationalization of 17 new public health units, and strengthening of 33 existing public health units at points of entry, that is, at 32 airports, 11 seaports, and 7 land crossings, setting up of 15 health emergency operations centers and 2 mobile hospitals, and setting up of a National Institution for One Health, a regional research platform for WHO, World Health Organization, Southeast Asia Region Office, 9 biosafety level 3 laboratories, and 4 regional national institutes for virology. Nutrition. To strengthen nutritional content, delivery, outreach, and outcome, we will merge the supplementary nutrition program and the Poshan Abhiyan and launch the Mission Poshan 2.0. We shall adopt
an intensified strategy to improve nutritional outcomes across 112 aspirational districts. Universal coverage of water supply. The World Health Organization has repeatedly stressed the importance of clean water, sanitation, and clean environment as a prerequisite to achieving universal health. The Jal Jeevan Mission Urban will be launched. It aims at universal water supply in all 4,378 urban local bodies with 2.86 crores household tap connections, as well as liquid waste management in 500 Amrit cities. It will be implemented over 5 years with an outlay of 2,87,000 crores. Swachh Bharat and Swasth Bharat. For further Swachhata of urban India, we intend to focus on complete fecal sludge management and wastewater treatment, source segregation of garbage, reduction in single-use plastic, reduction in air pollution by effectively managing waste from construction and demolition activities, and bioremediation of all legacy dump sites. The Urban Swachh Bharat Mission 2.0 will be implemented with a total financial allocation of 1,41,678 crores over a period of 5 years from 2021. Clean air. To tackle the burgeoning problem of air pollution, I propose to provide an amount of 2,217 crores of rupees for 42 urban centers with 1 million plus population in this budget. Scrapping policy. We are separately announcing, Honorable Speaker, a voluntary vehicle scrapping policy to phase out old and unfit vehicles. This will help in encouraging fuel-efficient, environment-friendly vehicles, thereby reducing vehicular pollution and oil import bills. Vehicles would undergo fitness tests in automated fitness centers after 20 years in case of personal vehicles and after 15 years in case of commercial vehicles. Details of the scheme will be separately shared by the ministry. Vaccines. The pneumococcal vaccine, a made-in-India product, is presently limited to only 5 states. It will be rolled out across the country. This will avert more than 50,000 child deaths annually. Honorable Speaker, I have provided 35,000 crores of rupees for COVID-19 vaccines in this year 21-22. I am committed to provide further funds if required. So the budget outlay for health and well-being is 2,23,846 crores in this BE 21-22 as against the BE of only 94,452 crores, and it marks an increase of 137%. The details of the same are at Annexure 1 of the speech. Honorable Speaker, I now move to the second pillar, physical and financial capital and infrastructure. Atmanirbhar Bharat, production-linked incentive schemes are things which I would like to place an emphasis. For a $5 trillion economy, our manufacturing sector has to grow in double digits on a sustained basis. Our manufacturing companies need to become an integral part of global supply chains, possess core competence and cutting-edge technology. To achieve all of the above, PLI schemes to create manufacturing global champions for an Atmanirbhar Bharat have been announced for 13 sectors. For this, the government has committed nearly
1.97 lakh crores over 5 years starting this financial year. This initiative will help bring scale and size in key sectors, create and nurture global champions, and provide jobs to our youth. Textiles. To enable the textile industry to become globally competitive, attract large investments, and boost employment generation, a scheme of Mega Investment Textiles Park will be launched in addition to the PLI schemes. This will create world-class infrastructure with plug-and-play facilities to create global champions in exports. 7 textile parks will be established over 3 years. Infrastructure. The National Infrastructure Pipeline, which I announced in December 2019, is the first of its kind. Whole of government exercise ever undertaken by Government of India. The NIP was launched with 6,835 projects. The project pipeline has now expanded to 7,400 projects. Around 217 projects worth rupees 1.10 lakh crores under some key infrastructure ministries have been completed. The NIP is a specific target which this government is committed to achieving over the coming years. It will require major increase in funding from both the government and the financial sector. In this budget, I propose to take concrete steps to do this in 3 ways. Firstly, by creating the institutional structures. Secondly, by a big thrust on monetizing assets. And thirdly, by enhancing the share of capital expenditure in central and state budgets. Infrastructure needs long-term debt financing. इस बजट में professionally managed development financial कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए जाएंगे। necessary to act as a provider, 3 तरह के enabler, and ठोस catalyst कदम for उठाए जा रहे हैं। infrastructure financing. Accordingly, I shall introduce a bill to set up a एसेट्स को development financial मॉनिटर करने के लिए सबसे ज्यादा I have जोर दिया provided a जाएगा। sum of 20,000 crore rupees to capitalize this institution. केंद्रीय और राज्यों के बजट में is to have a lending portfolio पूंजीगत of at least 5 बदलाव lakh होंगे। crores for this DFI within 3 years' time. Debt financing of InvITs and rates by foreign विकास portfolio वित्तीय investors will be enabled by इम्प्रूवमेंट की making आवश्यकता suitable है amendments जिसको in the relevant legislation. This will फाइनेंशियली further स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। access इसके लिए of बिल finance to InvITs and लाया rates, जाएगा। thus augmenting funds for infrastructure and real estate sectors. Asset monetization. Monetizing operating 5 लाख public करोड़ रुपए का infrastructure. लैंडिंग पोर्टफोलियो होगा 3 साल के भीतर। Monetizing operating public infrastructure assets is a very important financing option for new infrastructure construction. A national monetization संबंधित pipeline कानूनों में of सुधार करके potential उन्हें brownfield अंतर्राष्ट्रीय infrastructure जरूरतों के assets हिसाब से will बनाया be जाएगा। launched. An इससे asset इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल monetization एस्टेट सेक्टर dashboard के लिए will also be created for tracking the progress and to provide visibility लोगों के to लिए investors. फायदेमंद फैसले Some लिए important जाएंगे। measures in the direction of monetization are National Highways Authority of India and the PGCIL each have sponsored सार्वजनिक one संपत्तियों को InvIT मोनेटाइज that करना will भी attract जरूरी होगा। international and institutional investors. 5 operational roads with an estimated enterprise value of 5,000 crores of rupees. एसेट मोनेटाइजेशन डैशबोर्ड की भी रचना की जाएगी। Similarly, transmission assets of value 7,000 crores will be transferred to the PGCIL InvIT. Railways will monetize dedicated freight corridor assets for operations and maintenance after commissioning.
NHAI ने भी इस दिशा में कदम उठाए हैं कि जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेशक आकर्षित हो सकें। इसके अंतर्गत NHAI के लिए 5,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। 3 oil and gas pipelines of GAIL, Gas Authority of India Limited, IOCL and HPCL, Airports Authority of India, airports in Tier 2 and 3 cities, other railway infrastructure assets, warehousing assets of CPSE, such as the Central Warehousing Corporation, and अगली कतार के among others, एयरपोर्ट्स के लिए भी इसी तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं, जो इसी के तहत लाया जाएगा। Capital budget in the BE 2020-21, we had provided for 4.12 lakh crores for capital expenditure. It was our effort that in spite of resource crunch, we should spend more on capital, and we are likely to end this year at around 4.39 lakh crores, which I have provided in the RE of 2020-2021. For 21-22, I propose a sharp increase. कैपिटल बजट के प्रावधानों में भी तीव्र बदलाव किया जाएगा। 5.54 lakh crores, which is 34.5% more than the BE of 2020-2021. Of this, I have kept a sum of more than 44,000 crores. हमारी कोशिश है कि संसाधनों की कमी के बावजूद भी ज्यादा से ज्यादा खर्च किया जाए विकास के लिए। Programs or departments that show good progress in capital expenditure and are in need of further funds. Over and above this expenditure, we would also be providing more than 2 lakh crores to states and autonomous bodies for their capital expenditure. 21-22 के लिए 5.54 लाख करोड़ रुपीस का प्रावधान लाया जा रहा है। 44,000 लाख का बजट लाया जा रहा है। Roads and highways infrastructure. इस खर्च से अलग हम 2 लाख करोड़ से ज्यादा राज्यों को और स्वायत्त संस्थाओं को देंगे, जिससे कि वो पूंजीगत खर्च निकाल सकें। हम ऐसी निश्चित प्रक्रियाएं स्थापित करेंगे जिससे कि राज्य भी अधिक से अधिक पूंजी खर्च करने के लिए आगे आए। सड़क और राजमार्ग के बुनियादी ढांचे की व्यवस्था के लिए more economic corridors are also being planned. Some are 3,500 kilometers of national highway works in the state of Tamil Nadu at an investment के अंतर्गत 3,800 किलोमीटर सड़कों का निर्माण अब तक हो चुका है, जो अगले साल मार्च तक और ज्यादा किया जाएगा। Madurai Kollam corridor, Chittoor Tachur corridor, and construction will start next year. देश में राजमार्गों को और ज्यादा विकसित करने के लिए विशेष मार्गों की व्यवस्था की जा रही है। In the state of Kerala at an investment of 65,000 crores, including 600 kilometers तमिलनाडु में 3,500 किलोमीटर से ज्यादा मार्ग बनाए गए हैं। Third, 675 kilometers of highway जिन पर 1 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्चा आया है। At a cost of 25,000 crores. केरल में भी 1,001 किलोमीटर नेशनल हाईवेज का निर्माण हो चुका है। नेशनल हाईवे वर्क्स ऑफ अराउंड 19,000 इनमें 600 किलोमीटर का मार्ग मुंबई से कन्याकुमारी के लिए निर्मित किया गया है।
more than 34,000 नेशनल हाईवेज के covering more than निर्माण में 300 kilometers वृद्धि हुई है, national highways जिसमें will be undertaken 25,000 करोड़ in the की state लागत आई है। in the coming 3 years. Some of the flagship corridors and other important projects that would see considerable activity in 2021-22 are in Annexure 2 to my speech. असम में भी 19,000 I am also करोड़ providing an के नेशनल enhanced हाईवेज outlay का of निर्माण इस वक्त हो रहा है। 1,18,101 lakh crores, 1,18,101 crores for Ministry of Road Transport and Highways, of which 1,08,230 crores is for capital, the highest ever. असम में भी आने वाले वक्त में 3,000 किलोमीटर से ज्यादा मार्गों का निर्माण किया जाएगा। Honorable Speaker, sir, Indian Railways have prepared a national rail plan for India 2030. The plan is to create 21-22 के दौरान और भी जो कार्य किए जाएंगे वो इस बजट के परिशिष्ट में शामिल किए गए हैं। For an industry is at the core of a strategy to enable Make in India. It is expected that Western Dedicated Freight Corridor and Eastern Dedicated Freight Corridor will be commissioned. नेशनल हाईवे मिनिस्ट्री के लिए 1,08,232 करोड़ रुपए निर्धारित किए जा रहे हैं बजट के तौर पर, जिससे देश में नेशनल हाईवे का निर्माण हो सके। Dedicated Freight Corridor will be taken up in PPP mode in this year itself. Gomo-Dankuni section of 274.3 kilometers will be also taken up shortly in. मेक इन इंडिया के लिए सरकार बहुत सारी कोशिशें कर रही है। Dedicated Freight Corridor projects, namely कई ऐसे कॉरिडोर्स का निर्माण हो रहा है जो जून 2022 तक शुरू कर दिए जाएंगे। Corridor from Bhusawal to Kharagpur to Dankuni and North-South Corridor from Itarsi to Vijayawada. Detailed project report पूर्वी डेडिकेटेड कॉरिडोर का जो हिस्सा है जो 223 किलोमीटर है वो इस साल पूरा कर लिया जाएगा। Route kilometers, RKM as I referred to, electrified is expected to reach 46,000 kilometers, 46,000 RKM. That is, भविष्य में और भी कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। From 41,548 RKM, भुसावल से खड़गपुरी से दमकुनी, 100% electrification, इटारसी से विजयवाड़ा तक भी कॉरिडोर बनाया जाएगा। By December 2023. For passenger convenience and safety, the following measures are being proposed. We will introduce the aesthetically designed Vista Dome LHB coach on tourist routes to give better travel experience to passengers. The safety measures undertaken in the past few years have borne results. To further strengthen this effort, high-density network and highly utilized network routes of Indian Railways ब्रॉडगेज will be रास्तों का provided 100% with an इलेक्ट्रिफिकेशन indigenously इस साल के developed अंत तक automatic पूरा हो train जाएगा। system that eliminates train collision due to human error. I am providing a record sum of विस्टाडोम LSG कोच बनाए जाएंगे जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होंगे। of which 1,07,100 crores is for पिछले दिनों में जो कार्य किए गए उनका लाभ मिलना शुरू हुआ है, अब आगे और भी काम किए जाएंगे। We will work towards raising the share of public transport in urban areas through expansion of metro rail networks and augmentation देश of में city bus ऑटोमेटिक services. ट्रेन A सुरक्षा new scheme will be launched प्रणाली को at a cost देश of अपनाएगा। 18,000 crores to support augmentation of public bus transport services. The scheme will facilitate 1,10,055 करोड़ का प्रावधान रेलवे के लिए किया जा रहा है। Private sector players to finance, to acquire, to operate and to maintain over 20,000 buses. अब बात शहरी बुनियादी ढांचे की। The scheme will boost the automobile sector, provide fillip to economic growth, create employment opportunities for our शहरी youth, क्षेत्रों में and enhance परिवहन ease of mobility सुविधा को बढ़ाने के लिए for एक तरफ urban मेट्रो का नेटवर्क बढ़ाया जा रहा है,
वहीं दूसरी तरफ बसेस की सर्विस और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। बसेस की सेवा बढ़ाए जाने के लिए पीपीपी मॉडल अपनाया जाएगा ताकि प्राइवेट कंपनियां इसमें निवेश कर सकें। 2 new technologies, इस योजना से ऑटोमोबाइल सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, आने जाने की सुविधा भी बढ़ाई जाएगी। Safety in Tier 2 cities and peripheral areas of Tier 1 cities also. Central counterpart funding will be provided to Kochi Metro Railway Phase 2 of 11.5 kilometer at a देश cost में of 702 किलोमीटर मेट्रो रेल पहले से ही चल रही है। Chennai Metro Railway और भी नई Phase 2 रेलवे लाइंस का विस्तार किया जा रहा है। 9 kilometers at a cost of 63,246 crores. Bengaluru Metro Railway Project Phase 2A and 2B of 58.19 kilometers at a cost of 14,788 crores. Nagpur Metro Rail Project Phase 2 and Nashik Metro at a cost of कोची रेलवे मेट्रो को भी एक्सपेंशन के लिए मदद प्रदान की जाएगी। Respectively. Power infrastructure. केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त राशि मुहैया कराई जाएगी ताकि विस्तार हो सके। Have seen a number of reforms and achievements in power sector. We have added 139 gigawatts of installed capacity, connected an additional 2.8 crore households, and added 1.41 नागपुर रेल मेट्रो kilometers of transmission lines. को केंद्र सरकार की ओर से मदद पहुंचाई जाएगी। नागपुर और नासिक रेलवे मेट्रो को केंद्र सरकार की ओर से मदद मिलेगी। बिजली बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए निर्णायक कदम उठाए जा रहे हैं। इस बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। Alternatives to choose from among more than one distribution company. The viability of distribution companies is a serious concern. A revamped, reforms-based result. देश में जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनकी मोनोपोली बनी हुई है, जिस पर अब अंकुश लगाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। Over 5 years. The scheme will provide assistance to DISCOMs for infrastructure creation, including prepaid smart metering, ताकि देश में लोगों को एक से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की सुविधाएं मिल सके। Financial improvements. Prime Minister, while speaking at the third reinvestment डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की कार्यकुशलता एक बड़ा मुद्दा है। had announced plans to launch a comprehensive national hydrogen energy mission. It is now proposed to launch a hydrogen 3,05,009 करोड़ रुपए की लागत से for generating एक नई योजना की from green शुरुआत की जाएगी। ports, shipping and waterways. जो इस क्षेत्र में बेहतर व्यवस्थाओं के लिए शुरू की जाएगी। Their operational services on their own to a model where a private partner will manage it for them. For the purpose, 7 projects worth more than 2,000 crores will be offered by the major ports on private-public partnership mode in FY 21-22. प्रधानमंत्री के भावनाओं के अनुरूप इस साल in India डिजिटल will be launched by providing subsidy support to आयोजन Indian shipping companies in global tenders floated प्रपोज by किया जाएगा। ministries and CPSCs. An amount of 1,624 crores 7 will प्रोजेक्ट be provided over 5 years.
This initiative करोड़ के प्रोजेक्ट्स will पीपीपी enable मॉडल पर greater training and इंट्रोड्यूस किए employment जाएंगे। opportunities for Indian seafarers, besides enhancing Indian companies' share in global shipping. India has enacted Recycling of Ships Act in 2019 and acceded भारतीय to the शिपिंग टीम को Hong Kong सब्सिडी दी जाएगी International ग्लोबल Convention. सेंटर्स पर। Around 90 ship recycling yards at Alang in Gujarat have already achieved 5 वर्ष में बड़ी राशि दी HACCP जाएगी compliant इस पहल से। certificates. Efforts will be made to bring more ships to India from Europe भारतीय and नाविकों Japan. को रोजगार और Recycling प्रशिक्षण की capacities of अपॉर्चुनिटीज around मिल पाएंगी। 4.5 million light displacement ton LDT will be doubled by 2024. भारत ने 2019 में रिसाइकलिंग ऑफ शिपिंग एक्ट बनाया था। 1.5 lakh jobs for our youth. Petroleum and natural gas. Our government has kept fuel supplies running across the country. अलंग का जो without शिपिंग interruption रिसाइकलिंग प्लांट है वो पहले से during the प्रमाण प्राप्त कर COVID-19 चुका है। Lockdown period. Taking note of the crucial nature of the sector in people's lives, the following key initiatives are being announced. 1. Ujjwala scheme, which has benefited 8 crore households, will be इससे extended 1.5 to लाख cover रोजगार 1 crore more हमारे युवाओं के beneficiaries. लिए सृजित होंगे। We will add 100 more districts in next 3 years to the city gas distribution बिना किसी network. रोक-टोक के ईंधन सप्लाई जारी रही कोविड के दौरान भी। A gas pipeline project will be taken up in the Union Territory of Jammu and Kashmir. An independent gas transport लोगों के system जीवन में इस operator क्षेत्र के महत्व को देखते हुए कुछ प्रमुख बातों की घोषणा की जा रही है। will be set up for facilitation and coordination of booking of common 8 carrier करोड़ capacity परिवारों को लाभ देने वाली in all natural उज्ज्वला gas स्कीम अभी भी pipelines जारी on a रहेगी। non-discriminatory open access basis. 100 से अधिक सिटी गैस Financial डिस्ट्रीब्यूशन शहरों से जोड़े जाएंगे। Propose to consolidate the provisions of the SEBI Act 1992, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में गैस लाइन Securities Contracts प्रोजेक्ट Regulation चलाया Act जाएगा। 1956, and Government Securities Act 2007 into a rationalized single securities markets code. The government would support the development of a world कॉमन कैरियर कैपेसिटी at the GIFT के लिए काम किया जाएगा। इस मामले में कोई भेदभाव नहीं होगा, हर देशवासी इसका लाभ उठा सकेगा। The participants in corporate bond market during times of stress and to generally enhance secondary market liquidity, it is proposed to create a permanent institutional framework. The proposed body would purchase investment grade debt securities both in the stressed and normal सेबी times से जुड़े कुछ and कानूनों help को in the एकजुट development किया of the जाएगा। bond market. In the budget 2018-19, government had announced its intent to establish a system of सरकार एक regulated विश्व स्तर gold का फिनटेक exchanges in हब the country. बनाने के लिए For the काम purpose, करेगी। SEBI will be notified as the regulator and मिशन की भी the व्यवस्था करने जा Amazonia रही हूं package ताकि from Brazil, मुख्य along with भारतीय a few भाषाओं smaller में Indian उपलब्ध ज्ञान packages. इंटरनेट के माध्यम As से part of पूरे the देश में Gaganyaan उपलब्ध कराया जा mission सके। activities, 4 Indian astronauts are being trained on generic spaceflight aspects in Russia. The first unmanned launch is slated for December 2021. स्पेस विभाग के अंतर्गत एक नई व्यवस्था Oceans स्थापित are की a जा रही है जो storehouse of living and प्रक्षेपण non-living से resources. संबंधित To better understand this realm, we will प्रक्रियाओं launch a को deep और ocean मजबूत mission तरीके with a से budget outlay तथा of more than 4,000 crores over 5 years. इस दिशा में This mission will हो रहे cover प्रयासों को deep और ocean मजबूत survey, प्रदान करेगी। exploration and projects for the conservation of deep sea biodiversity. I come to the sixth pillar, Honorable Speaker, minimum government, maximum governance. Honorable हम एक Speaker, डीप sir, ओशियन मिशन को भी this लागू is the करेंगे last of the जिसके six लिए pillars. अगले 5 This सालों will के दौरान outline plans 4,000 for करोड़ reforms in one of our रुपयों की core व्यवस्था principles की of जाएगी। minimum government, maximum governance.
डीप सी बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण को भी बढ़ावा दिया जाएगा। छठे स्तंभ के अंतर्गत अब मैं अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ। मिनिमम गवर्नेंस, मैक्सिमम गवर्नमेंट के तहत the National Commission for Allied Healthcare Professionals Bill in Parliament. न्यूनतम सरकार अधिकतम प्रशासन के तहत अनेक उपाय किए गए हैं ताकि न्याय जल्दी से जल्दी सुलभ कराया जा सके। मैं अब कुछ और प्रस्ताव रखने जा रही हूँ। Additionally, to bring about transparency, efficiency and governance reforms, नेशनल कमीशन फॉर एलाइड हेल्थ केयर बिल midwifery commission bill will be introduced by the government for passing. To have ease of doing business for those who deal with 56 एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स and को carry out contracts, ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और नर्सिंग प्रोफेशन में, नर्सिंग के पेशे में सुधार लाने के लिए resolution of contractual disputes. सरकार एक विधेयक लाएगी। Private investors and contractors. Honorable Speaker, sir, the forthcoming census सरकार और सीपीएससी से कारोबार करने वाले लोगों की मदद के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाएगा ताकि अनुबंध संबंधी विवादों को जल्दी से निपटाया जा सके। I have allocated 3,768 crores in this year 21-22. आगामी जनगणना की जो प्रक्रिया है वो पहली डिजिटल जनगणना की प्रक्रिया होने वाली है। इसके लिए From the Government of India's side, I propose to grant 300 crores to the Government of Goa for the celebration. 3,768 करोड़ रुपया 21-22 के बजट में प्रावधान किया जा रहा है। गोवा पुर्तगाल से मुक्ति की हीरक जयंती मना रहा है। इसके लिए 300 करोड़ रुपए केंद्र सरकार गोवा सरकार को दे रही है। 1000 करोड़ रुपए चाय बागान श्रमिकों के लिए जो आसाम और पश्चिम बंगाल में विशेषकर महिलाओं और बच्चों पर खर्च किए जाएंगे, इसके लिए एक विशेष योजना बनाई जाएगी। In these last few paragraphs of part A of my speech, I draw the attention of this august House to the fact that at the beginning of the current financial year, the pandemic's impact on the economy राजकोषीय resulted स्थिति in a weak revenue inflow. This was combined with high expenditure to provide essential relief to vulnerable sections of the society, especially the poor, the women, scheduled castes and scheduled tribes. Unlike many other countries, we opted for a series अपने पाठ एक इन अंतिम पैराग्राफ में मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि मौजूदा वित्त वर्ष के आखिरी महीनों के दौरान अर्थव्यवस्था पर काफी जोर पड़ा था, जिसका असर हमारी जनसंख्या के सभी वर्गों पर पड़ा है। इस वैश्विक महामारी के दौरान सरकार ने ऐसी आर्थिक नीतियां अपनाई ताकि तेजी से बदलती परिस्थितियों से सार्थक ढंग से निपटा जा सके। लॉकडाउन के खुलने के साथ ही सरकार ने ऐसी नीतियां अपनाई ताकि सरकारी खर्च बढ़ाया जा सके, ताकि विभिन्न क्षेत्रों में और ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा हो सकें। In the BE state. So the beginning of the year, we had marked only 4.12 lakh, whereas it is 4.39 lakh crores as we end the year. हमने एक्सपेंडिचर की क्वालिटी को बेहतर किया है। 2021 is pegged at 9.5% of the GDP. Fiscal deficit in RE 2020 to 2021
is pegged at इन व्यवस्थाओं के लिए वित्त वर्ष की शुरुआत में We have funded this through government borrowing, 4 multilateral लाख borrowing, करोड़ से small ज्यादा की saving funds, and व्यवस्था थी, short-term जो अब तक borrowing. 4,40,000 करोड़ से ज्यादा की ओर पहुंच चुकी है। फिस्कल For डेफिसिट which की we अब would बात be करते हैं। approaching the market in these 2 months. We would be needing under 80,000 राजकोषीय crores for घाटा which we would be 20-21 के दौरान approaching the market 9% in these 2 months. का To ensure that the संकेत है। economy is given the required इसके लिए push, our BE अनेक estimates प्रकार के for कदम उठाए गए। expenditure in 21-22 are 34.83 lakh crores. This includes 5.54 lakh crores as capital राजकोषीय expenditure वित्त व्यवस्था and को increase of सीमा में रखने के लिए सरकार को 34.5% अगले 2 over the महीनों के peak दौरान year 8,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी, जिसके लिए सरकार The fiscal मार्केट का deficit in BE रुख करेगी। 21-22 is estimated to be 6.8% of the GDP. The gross borrowing from the market for the next year would be around 12 lakh crores. We plan to continue with our path of fiscal consolidation and intend to reach the fiscal deficit level below 4.5% of the GDP by 2025-2026. वित्त वर्ष 21-22 के दौरान राजकोषीय घाटा जीडीपी का केवल 6.8% रहने का अनुमान है। Through improved compliance and secondly by increased receipts from monetization of assets, including public sector enterprises and land. The contingency fund of India is being proposed to be augmented. राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया को अपनाते हुए हमारा लक्ष्य है कि वित्त वर्ष 25-26 तक ये राजकोषीय घाटा जीडीपी के कुल 4.5% के आसपास हो जाए। In accordance with the views of the 15th Finance Commission, we are allowing a normal ceiling of net borrowing for the states at 4%. कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया को और सुदृढ़ करने के लिए प्रस्ताव है, जिससे 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपए करने का प्रावधान है इस वित्त विधेयक के माध्यम से। will also be provided subject to conditions. States will be expected to reach a fiscal deficit of 3% of GSDP by 2023-24 as recommended by the 15th Finance Commission. In the July 2019-20 budget, I introduced the Statement 27 on extra budgetary अतिरिक्त resources. वित्त व्यवस्था करने के लिए It disclosed the borrowings of the government agencies that went towards funding Government of India schemes and whose repayment burden was on the government. In my 2020-21 जुलाई 19-20 की बजट में मैंने the scope and coverage of that एक्स्ट्रा बजटरी including the loans रिसोर्सेज के बारे में provided by वक्तव्य government शामिल to किया था, the जिसमें FDI सरकारी to एजेंसियों के corporations. कर्ज का विवरण था Taking a step जो सरकारी further in योजनाओं this पर खर्च direction, होता है, I propose जिसका to भुगतान सरकार को discontinue करना है। the NSSF 20-21 के loan to बजट में FDI for food subsidy and accordingly budget provisions have been मैंने उस made वक्तव्य का in दायरा RE बढ़ा दिया है, 2020-21 जिसमें सरकार and in the द्वारा BE FCI को 2021-22. The दिए गए extra कर्ज budgetary शामिल किए गए हैं। resource इस दिशा में are आगे बढ़ते at हुए Annexure मैं 6. We know that NSSF the Act mandates fiscal लोन deficit जो of 3% of FCI GDP को जो to फूड be सब्सिडी achieved के by लिए कर्ज 31st दिया जाता है, March उसे मैं बंद कर रही हूँ। 2021. The effect of this year's unforeseen and unprecedented circumstances has necessitated the submission of a deviation statement under sections 4 of subclause 5 and section 7 subclause 3 and 3b. हम जानते हैं कि राजकोषीय घाटा 3% होना चाहिए। इस वर्ष के असाधारण परिस्थितियों के कारण Central government fiscal deficit along the broad path that I have already indicated, I will be introducing an amendment कुछ to the खंडों के FRBM तहत Act. इसमें कुछ परिवर्तन करना पड़ा Honorable है, Speaker, जो on the मैं 9th of December 2020, FRBM 15th Finance Commission दस्तावेज के submitted अंग its के final रूप में report सदन के पटल पर covering the रख रही हूँ। period 2021
to 2026 to the Rashtrapati Ji. The government has laid the Commission's report. मैं FRBM एक्ट में एक संशोधन का प्रस्ताव रखने वाली हूँ। 9 दिसंबर 2020 को वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी थी, जो 2021 से 2026 की अवधि के लिए है। ये राष्ट्रपति को सौंप दी गई है रिपोर्ट। जिसमें राज्यों की हिस्सेदारी 41% रखी गई है। On the Commission's recommendation, 1,18,452 crores as revenue deficit grant to 17 14वें वित्त आयोग में जम्मू कश्मीर के राज्य के नाते सहायता दी जा रही थी। अब केंद्र सरकार लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों को ये सहायता देगी। I would now move to part B of my speech. राजस्व घाटे की ग्रांट 17 राज्यों को दी जाएगी, जो पहले 74,000 करोड़ के आसपास 14 राज्यों को दी जा रही थी। अब पार्ट बी। In these trying times, when many economies are struggling to revive, our people and our industry have exhibited remarkable resilience. As I mentioned already, post-pandemic, a new world order seems to be emerging. विश्व आज एक वैश्विक महामारी की चुनौती का गंभीर सामना कर रहा है। इसके कारण विश्व की अनेक अर्थव्यवस्थाएं धुलमुल हो रही हैं, लेकिन हमारे देश की अर्थव्यवस्था ने और हमारे उद्योगों और सभी लोगों ने मिलकर इस चुनौती का कार्य सक्षम ढंग से किया है। विश्व अर्थव्यवस्था को सुधारने की दिशा में ले जाने के लिए भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। यह इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि सरकार रोजगार और निवेश दोनों पर बराबर रूप से जोर दे रही है। Direct tax proposals. Keeping this in mind, the words of Tirukkural, our government introduced a series of reforms in the direct tax system for the benefit of our taxpayers and the economy. Few months prior to the pandemic, in order to attract investment, सही शासक वही है जो धन और संपदा एकत्र करे, लेकिन इसका लाभ आम लोगों तक पहुंचाए। The dividend distribution tax too was abolished. The burden of taxation on small taxpayers was सरकार ने reduced by increasing डायरेक्ट rates. टैक्स सिस्टम में अनेक सुधार The किए हैं। return filers saw a dramatic increase to 6.48 विश्व महामारी के दौरान निवेश को बढ़ावा देने के लिए और सभी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने अनेक करों में रियायतें दी हैं। छोटे करदाताओं पर कर का बोझ कम करने के लिए कई करों में रियायत दी गई है। Relief to senior citizens. I begin my direct tax proposals by offering my pranam to our senior citizens. Many of them, despite having foregone several basic necessities of their own, have strived to build our nation. Now in the 75th टैक्स प्रशासन को और आसान बनाने के लिए मैं अनेक सुधारों का प्रस्ताव करती हूँ। सीनियर सिटीजन को मैं नमन करती हूँ, क्योंकि इस महामारी के दौरान उन्हें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसको उन्होंने सफलतापूर्वक सहा। पचहत्तर वर्ष से अधिक आयु के सीनियर सिटीजन्स के लिए मैं प्रस्ताव करती हूं कि अब उन्हें इनकम टैक्स वेतन भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर उनकी आय का स्रोत केवल पेंशन है।
जो पेइंग बैंक है वह उनकी आय पर खुद ही कर काट लेगा। I therefore propose to reduce this time limit for reopening of assessments to 3 years from the present 6 years. अभी की व्यवस्था के अनुसार 6 वर्ष में और बहुत गंभीर कर चोरी के मामले में 10 वर्ष के रिटर्न की समीक्षा की जा सकती है। असेसमेंट को दोबारा शुरू करने के लिए 6 से घटाकर 3 वर्ष, गंभीर कर चोरी के मामलों में जहां 50 लाख या उससे अधिक आय को छुपाने के सबूत होंगे। Setting up the dispute resolution committee. Honorable Speaker, it has been the resolve of this government तभी असेसमेंट को 10 वर्ष तक का असेसमेंट दोबारा समीक्षा की जा सकती है। इसके लिए प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर की अनुमति आवश्यक होगी। विवाद समाधान कमेटी की स्थापना की जाएगी। कर व्यवस्था में मुकदमेबाजी कम करने की पूरी कोशिश की जाएगी। विवाद से विश्वास योजना जो शुरू की गई है, जिससे करदाताओं के समय और संसाधनों पर बोझ कम हो। 1,10,000 करदाता इसका लाभ उठा चुके हैं। 85,000 करोड़ रुपए के कर विवाद सुलझाए गए हैं। छोटे करदाताओं के लिए ये मुकदमेबाजी का बोझ कम करने के लिए है। विवाद समाधान समिति का गठन किया जाएगा। 50 is the income tax appellate tribunal. I now propose to make this tribunal faceless. We shall establish a national faceless income tax appellate tribunal center. All communication कर व्यवस्था को फेसलेस बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है ताकि किसी तरह का भेदभाव ना हो। It shall be done through video conferencing. Relaxations to NRI. इनकम टैक्स एपिलेट ट्रायल फेसलेस होगा। फेसलेस इनकम टैक्स इस तरह के सेंटर्स बनाए जाएंगे। सब इलेक्ट्रॉनिक विधि से काम करेंगे, जहां पर व्यक्तिगत रूप से बुलाना अगर जरूरी होगा तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऐसा होगा। अब बात करेंगे एनआरआईज को लेकर। एनआरआई जब भारत आते हैं तो विदेशी रिटायरमेंट अकाउंट में जो धन जमा होता है उसको लेकर कुछ विवाद होता है, क्योंकि दोनों जगह की व्यवस्थाएं अलग अलग हैं। डबल टैक्सेशन की कठिनाई खत्म करने के लिए नियम अधिसूचित किया जाएगा। अगर 1,000 करोड़ रुपए का कुल नेटवर्क है तो ऑडिट कराना पड़ता है। टैक्स ऑडिट का सीमा 5 करोड़ कर दी गई थी। अब डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए dividend was made taxable in the hands of shareholders. Now, in order to provide अब ऐसे लोगों के लिए ये सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ की जा रही है। पिछले बजट में डिविडेंड बजट को खत्म कर दिया गया था। शेयर धारकों के लिए डिविडेंड कर लगा दिया गया था। उसको आसान करने के लिए shall arise only after the declaration or payment of dividend. Also for the foreign शेयर portfolio investors, धारक की डिविडेंड आय का सही अनुमान नहीं लगा सकता। dividend income at lower treaty rate.
attracting foreign investment डिविडेंड into आय पर infrastructure अग्रिम कर का दायित्व तभी पैदा होगा for attracting foreign जब investment डिविडेंड in the infrastructure घोषित कर दिया जाएगा we have और भुगतान granted कर दिया जाएगा। 100% tax exemption subject to certain conditions to foreign sovereign wealth funds and pension funds on their income from investment in Indian इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए पिछले बजट में 100% कर छूट दी गई थी कुछ शर्तों के साथ विदेशी सॉवरेन वेलफेयर फंड्स के लिए जो आमदनी उन्हें भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से होने वाली थी उनमें से कुछ को कठिनाई हो रही है। in order to allow funding of infrastructure by issue of zero coupon bonds I propose to और अधिक संख्या में infrastructure debt फंड भारत में निवेश होने के लिए कुछ नियमों में शर्तों में ढील दे रही हूं। zero coupon bonds affordable housing and rental housing. This Notified government sees housing infrastructure for all and affordable housing डेप्थ as फंड priority areas. In July कार 2019 योग्य budget, जीरो I कूपन बॉन्ड provided जारी कर additional सकेंगे। reduction of interest Affordable amounting housing. to 1.5 lakh for loan taken to purchase an affordable house. I propose to सभी extend लोगों the को eligibility of this condition by one more आवासीय year सुविधा हो to और 31st किराए पर March मकान 2022. उपलब्ध हों। The additional deduction of 1.5 lakh shall therefore be available जुलाई for 19 के loans बजट में taken up to मैंने 31st March 2022 for the 1.5 purchase लाख of रुपए तक affordable के houses. रेट पर Further, छूट to की keep व्यवस्था up की the थी। supply of affordable इस व्यवस्था houses, को I propose that the अब affordable एक और साल housing के लिए project बढ़ाया जा रहा है यानी can avail यह the tax अब holiday 31 मार्च for one 22 more तक year लागू till होगी 31st March 1990 यानी to 31st March 2022. 31 मार्च These are available 2022 now for तक projects also. We are committed to promote supply दिए of गए ऋण affordable पर 1.5 लाख rental तक की housing छूट for मिलेगी migrant अफोर्डेबल workers. हाउसिंग के For तहत। this, I propose to allow tax exemption अफोर्डेबल for हाउसिंग notified affordable लागू करने rental वाले housing प्रोजेक्ट्स projects. को भी उपलब्ध सुविधा अब एक और साल के लिए बढ़ा दी गई है जो 31 मार्च As I mentioned 2022 in तक Part A लागू of my रहेगी। speech, the government is committed to making the International Financial सस्ते Services मकान Center किराए in पर GIFT उपलब्ध हो City सकें, a global financial hub. खास In करके addition to the tax जो incentives माइग्रेंट लेबरर already को provided, सुविधा I प्रदान propose करते to हैं include, उनके लिए भी among मैं others, विशेष tax व्यवस्था की holiday for घोषणा capital करती हूँ। gains for aircraft leasing companies, IFSC के लिए tax टैक्स रियायतें, exemption for aircraft lease rentals paid to foreign lessors, tax incentive for भारत relocating foreign funds in the सरकार IFSC, चाहती है कि हमारा देश and to allow अंतर्राष्ट्रीय tax exemption to the फिस्कल व्यवस्थाओं का investment केंद्र बने। division of foreign इसके लिए banks located in the IFSC. एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनीज को टैक्स Pre-filling एग्जम्पशन of प्रदान returns. किया Honorable जाएगा। Speaker, in order to ease फॉरेन compliance for the taxpayer, लेसर details of salary को भी income, रियायत दी जाएगी तथा TDS, इस दिशा में etc. और भी already कई come और pre-filled in income व्यवस्थाओं tax को returns. की To रियायत further प्रदान ease की जा रही है filing of returns, IFSC के तहत। details of capital gains, प्री from listed फिलिंग securities, ऑफ रिटर्न्स, dividend income, and interest from banks, post office, etc. will also Taxpayers be now pre-filled. आसानी से अपना Relief टैक्स पे to कर small सकें। इसके trusts. लिए We उनके hope to इनकम reduce टैक्स रिटर्न में compliance burden on small उच्च संबंधित charitable जानकारी trusts उपलब्ध करा running दी जाती है educational पहले से ही। institutions and इसके तहत hospitals. So far, कैपिटल there is a गेन्स और blanket exemption डिविडेंड to such से entities मिलने वाली आय whose तथा annual बैंक receipt से does not मिलने वाली exceed 1 crore of rupees. I now propose जो to आय है increase this amount उसको to भी 5 अब crores. प्री नॉलेज के Labor रूप में welfare. We टैक्स have पेयर noticed को that some उपलब्ध employers कराया जाएगा उनकी deduct रिटर्न the के तहत। contribution of employees toward provident funds, superannuation funds, and other social security funds, but do not deposit these contributions within जिन the लोगों की specified time. For these employees, this means a loss of interest or income. In cases where an employer later becomes financially unviable, non-deposit results in a permanent loss for the श्रमिकों के लिए employees.
सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा से संबंधित प्रावधान। अनेक नियोक्ता अपने श्रमिकों से संबंधित एपीएफ जमा नहीं कराते हैं, जिससे उनके श्रमिकों को भारी नुकसान होता है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि श्रमिकों से जुड़े जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर उसे समय पर जमा कराएं, इसके लिए भी व्यवस्था की जा रही है। इन स्टार्टअप्स के लिए इंसेंटिव्स, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए प्रस्ताव है कि ऐसे स्टार्टअप जो टैक्स हॉलिडे है उन्हें अब एक और साल के लिए टैक्स हॉलिडे बढ़ाया जा रहा है, जो 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगा। इन लोगों को कैपिटल गेन्स की सुविधा भी एक और वर्ष के लिए बढ़ाई जा रही है, जो 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। अब अप्रत्यक्ष करों के प्रस्ताव हैं जीएसटी। उससे पहले सदन को जीएसटी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जीएसटी को 4 साल हो चुके हैं और उसे आसान करने के कई उपाय किए गए हैं। उनमें एसएमएस के जरिए छोटे करदाताओं के लिए मासिक भुगतान, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस, इनपुट टैक्स का वैलिडेटेड स्टेटमेंट, पहले से भरे हुए जीएसटी रिटर्न, जीएसटी एंड सिस्टम की क्षमता भी बढ़ाई गई है। डीप एनालिटिक्स जैसी तकनीक, इंटेलिजेंस तकनीक का उपयोग करके कर चोरी करने वाले लोगों को पकड़ने की व्यवस्था की जा रही है। इसके परिणाम बहुत उत्साहजनक हैं। कुछ महीनों में रिकॉर्ड उगाही हुई है। जीएसटी परिषद ने सारे विवादित मुद्दों का समाधान किया है। काउंसिल के अध्यक्ष के नाते मैं आश्वासन देती हूं कि जीएसटी को और सरल बनाने के लिए और सारी विसंगतियों को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। Warehousing Development and Regulatory Authority will be strengthened to set up a commodity market ecosystem arrangement, including vaulting, assaying, logistics, etc., in addition to warehousing. Towards investor protection, I propose to introduce an investor charter बॉन्ड मार्केट के विकास के लिए मददगार कदम उठाए जाएंगे। Financial products. To give a further boost to the non-conventional energy sector, I propose to provide additional capital infusion of 1,000 crores to Solar Energy Corporation of India. वेयरहाउसिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी को मजबूत किया जाएगा। To Indian Renewable Energy Development Agency. I propose to amend the वेयरहाउसिंग के अलावा लॉजिस्टिक्स के लिए भी व्यवस्थाएं बढ़ाई जाएंगी। From 49% to 74% in insurance. सभी फाइनेंशियल प्रोडक्ट के इन्वेस्टर्स को इसमें शामिल किया जाएगा। And control with safeguards. Under the new structure, the majority of directors on the board 1000 करोड़ रुपए से अतिरिक्त पूंजी सोलर पावर के लिए लगाई जाएगी। With at least 50% of directors being independent directors and specified percentage of profits being retained. 1938 के बीमा कानून में संशोधन। Stressed asset resolution by setting up a new structure. एफडीआई की सीमा 49 से बढ़ाकर 74% की जाएगी। Public sector banks of their stress सारे सुरक्षा उपायों के साथ उन्हें नियंत्रण सौंपा जाएगा। Clean up the bank books. An asset reconstruction company limited and asset प्रमुख पदों पर रेसिडेंट भारतीय ही होंगे। To consolidate and take over the existing stressed debt and then manage
and dispose of the एक निश्चित प्रतिशत का मुनाफा आरक्षित रखा जाएगा and other potential investors for eventual value realization. Recapitalization of PSB. To further consolidate the financial capital capacity of PSB, बैंकों के बही खाते सही रखने के लिए प्रस्ताव है। of 20,000 crores is proposed in एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाई जाएगी Deposit insurance. Last जो year, डूबे हुए कर्जों का government प्रबंध had अपने approved हाथ में लेगी। an increase in the deposit insurance cover from 1 lakh rupees to 5 lakhs for bank customers. इसकी पूरी उगाही के लिए प्रयास किए जाएंगे। Moving amendments to DICGC Act 1961 सार्वजनिक बैंकों का रिकैपिटलाइजेशन के लिए प्रयास किए जाएंगे। the provision so that if a bank is temporarily unable 20,000 करोड़ रुपए का रिकैपिटलाइजेशन करने का प्रस्ताव है। such bank can get easy and time-bound access to their deposits. To the पिछले साल extent of सरकार the ने deposit डिपॉजिट cover, इंश्योरेंस this would help depositors of का banks कवर 1 लाख that से are बढ़ाकर 5 currently लाख किया था। under stress. To improve मैं इसके credit लिए संशोधन discipline, लाऊंगी while continuing to protect the interests of 1961 small के कानून borrowers, में। for NBFCs with minimum asset size of 100 crores, the minimum loan size eligible for debt recovery under the ताकि बैंक अगर कुछ समय के लिए अपना securitization and reconstruction of financial assets दायित्व ना and enforcement निभा of सके security interests तो surfacing जमाकर्ताओं को किसी तरह का तनाव ना हो। to be reduced from the existing इसके level लिए of 50 lakhs to 20 lakhs. प्रयास Company किए matters. जाएंगे जो भी बैंक स्ट्रेस The में हैं उनके जमाकर्ताओं को decriminalization लाभ of the होगा। procedural and technical compoundable offences under Companies Act 2013 is now complete. I now propose to take up decriminalization of the Limited Liability Partnerships Act 2008. Honorable Speaker, I propose to revise the definition under the Companies Act 100 करोड़ के NBFC जो है उन्हें 5,000 करोड़ से घटाया जाएगा। 2013 for small companies by increasing the threshold for paid up capital from not exceeding कंपनी मामलों के लिए भी 50 lakhs to सरकार not ने exceeding 2 अनेक crores कदम उठाए हैं and turnover from not exceeding 2 crores to not exceeding 20 crores. This will benefit more than 2 lakh companies in easing their compliance requirements. As a further measure which directly benefits मैं startups, कंपनी अधिनियम के तहत कुछ परिभाषाओं को संशोधित I करने का propose प्रस्ताव to भी incentivize रखती हूँ। the incorporation of one-person companies by allowing one-person companies to grow without any restriction on paid-up capital and turnover, allowing their conversion into any other type of company at any time, reducing the residency limit for an Indian citizen to set up an one-person company from 182 days to 120 days, and allow also non-resident Indians to incorporate OPCs in India. This will be a big boost for startups. To ensure faster resolution स्टार्टअप्स of और cases, इनोवेशंस को बढ़ावा the देने के लिए मैं NCLT 1% framework will be strengthened. और कंपनियां बढ़ाने के लिए E-court प्रस्ताव system पेश will- करती हूँ। shall be implemented, and alternate methods of debt resolution and special framework for MSME इन कंपनियों को shall किसी be भी अन्य introduced. प्रकार की कंपनी में During the बदलने coming में fiscal, छूट होगी। we will be launching data analytics, इसके तहत जो artificial intelligence, machine learning driven MCA 2.1 कंपनी की जो अवधि है उसे 182 दिनों से हटाकर 120 दिन करने का प्रस्ताव है। 3.0, MCA 21 version 3.0. This version 3.0 will have additional modules for कंपनी से जुड़े मामलों को जल्दी से निपटाने के लिए भी e-consultation बदलाव होंगे। and compliance MSME के लिए भी अच्छी व्यवस्थाएं लाई जा रही हैं। disinvestment and strategic sale. In spite MSME of के लिए COVID-19,
We have kept working अनेक तरह के towards कदम उठाए जाएंगे। strategic मशीन disinvestment. लर्निंग जैसे A number कई of transactions, प्रावधान namely इसमें लाए जा रहे हैं। BPCL, Air India, Shipping Corporation of India, Container Corporation of India, IDBI Bank, Bharat Earth Movers Limited, Pavan Hans, नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड कंपनियों से जुड़े आंकड़ों को सुनियोजित करने के लिए एमसीआई का तीसरा फेज लाया जा रहा है, जिसकी वजह से कंपनी से जुड़े नियमों में और सुधार होगा। This would require legislative amendments, and I propose to introduce the amendments in this session itself. In 21-22, we would also bring the IPO of LIC, for which I am bringing the requisite amendments in this session itself. In the Atmanirbhar package, I had announced that we will come out with a policy of strategic disinvestment of public sector enterprises. I'm happy to inform the House that the government has the government has approved the said policy. The policy provides a clear roadmap for इस disinvestment in all प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अनेक कानून में परिवर्तन की We have kept 4 areas जरूरत होगी, जिसके लिए संशोधन किए जाएंगे। Minimum CPSEs will be maintained and rest privatized. In the remaining sectors of all CPSEs will be privatized. The main highlights of the policy are mentioned in Annex आत्मनिर्भर भारत के लिए मैंने कई घोषणाएं की थी, जिसके तहत नए पीसीओ में पीएसयू में निवेश की बात कही गई थी। next list of center public sector companies that would be taken up for strategic disinvestment. To similarly incentivize states to take to disinvestment of their public sector companies, we will work out an incentive package of central funds to states. पीएसयू में विनिवेश को निर्धारित करने के लिए कई तरह के सिद्धांत भी निर्धारित किए गए हैं। With government ministries and departments and public sector enterprises. Monetizing of land can either be by way of direct sale or concession or by similar means. This requires special abilities, and for this purpose, I propose to use a विनिवेश की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। company that would carry out this activity. In order to ensure timely अगले साल कई पीएसयू का विनिवेश होगा। Or loss-making CPSEs, we will introduce a revised mechanism that will ensure timely closure of such units. I have estimated 1,75,000 crores as receipts from disinvestment in BE 21-22. सरकार के कई विभागों के पास और सार्वजनिक उपक्रमों के पास जमीन उपलब्ध है, जिसे अब मोनेटाइज किया जाएगा। Under the Treasury Single Account, the TSA system, autonomous bodies directly draw funds from the government's account घाटे में चल रही अनेक सरकारी कंपनियों को expenditure, saving interest costs. दुरुस्त करने के लिए भी सरकार एक तय नीति लेकर आ रही है, जिसके तहत from 21-22. इन कंपनियों को समय रहते बंद किया जा On the सके। recommendation of the 15th Finance Commission, we have undertaken a detailed exercise to rationalize and bring down the number of centrally sponsored schemes. This will enable consolidation of outlays for better impact. The government is committed to the development of multi-state cooperatives and will provide all support to them. To further streamline the ease of doing business for cooperatives, 15वें I वित्त propose to आयोग set up की a separate सिफारिश administrative structure के for them. हिसाब से हमने कोशिश की है। So the third pillar of केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या कम करने की development for aspirational कोशिश की गई है। Honorable Speaker, sir, under this pillar, I will cover agriculture and allied sectors, farmer सरकार welfare,
मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स के विकास के लिए कृत संकल्प है। And financial inclusion. Agriculture. Our government is committed to the welfare of farmers. The MSP regime has undergone a sea change to assure price that is आत्मनिर्भर भारत का तीसरा पिलर the cost of production across आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, जिसके तहत मैं कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए the procurement has also किसान कल्याण to increase at a steady pace. This has resulted in increase in payment to farmers substantially. In case of wheat, a total amount paid to farmers in 2013-14. Honorable Speaker, sir, the data that I give now is important for all honorable members to kindly hear. In case of wheat, the total amount paid to farmers in 2013-14 was 33,874 crores. In 2019-20, it was 62,802 crores. And even better, Honorable Speaker, in 2020-2021, this amount paid to farmers was 75,060 crores. Honorable Speaker, again an important fact, the number of wheat growing farmers that were benefited increased in 2020-21 to 43.36 lakhs compared to 35.57 lakhs in 2019-20. That much of an increase within 1 year. For paddy, again an important data. For paddy, the amount paid in 2013-14 was 63,928 crores. In 2019-20, this increased to 1,41,930 crores. Even better, in 2020-2021, this is further, in 2020-21, this is further estimated, and I'm saying this is further estimated because the procurement is ongoing, and therefore I can't give you the final figure. This is further estimated to increase to 1,72,752 crores. The number of farmers benefited increased from 1.24 crores in 2019-20 to 1.54 crores in 2020-21. In the same way, Honorable Speaker, sir, in the case of pulses, the amount paid in 2013-14 was 236 crores. In 2019-20, this was increased to 8,285 crores. Now in 2021, it is at 10,530 crores. More than 40 times increase from 2013-14. The receipts to cotton farmers have seen a stupendous increase from 90 crores in 2013-14 to 25,974 crores I'm giving you data as of 27th January 2021. This is bound to increase. From 90 crores for cotton farmers in 2013-14 to 25,974 crores in 2021. All the details in complete narration is available in Annexure 4 to my speech.
Early this year, Honorable Prime Minister had launched the Swamitva scheme. Under this, a record of rights is being given to property owners in villages. Up till now, about 1.80 lakh property owners in 1,241 villages have been provided cards. I propose during 21-22 to extend this to cover all states and union territories. To provide adequate credit to our farmers, I have enhanced the agricultural credit target to 16.5 lakh crores in this year. We will focus on ensuring increased credit flow to animal husbandry, Pashupalan, dairy, and to Matsyakar, to the fisheries. We are enhancing the allocation to the Rural Infrastructure Development Fund from 30,000 crores to 40,000 crores. The Micro Irrigation Fund with a corpus of 5,000 crores has been created under NABARD. I propose to double it by augmenting it by another 5,000 crores. To boost value addition in agriculture and allied products and their exports, the scope of Operation Green Scheme that is presently applicable to only tomatoes, onions and potatoes will be enlarged to include 22 perishable crops. Around 1.68 lakh crore farmers, around 1.68 crore farmers are registered, and 1.14 lakh crores of rupees trade value has been carried out through e-NAMs, the National Agricultural Market. Keeping in view the transparency and the competitiveness that e-NAM has brought into the agricultural market, 1,000 more mandis will be integrated with e-NAM. Honorable Speaker, sir, with all this, the Agricultural Infrastructure Fund would be made available to the APMCs for augmenting their infrastructure facilities. Fisheries. I am proposing substantial investments in the development of modern fishing harbors and fish landing centers. To start with, 5 major fishing harbors, Kochi, Chennai, Visakhapatnam, Paradip and Petua Ghat, will be developed as hubs for economic activity. We will also develop inland fishing harbors and fish landing centers along the banks of rivers and waterways. Seaweed farming is an emerging sector with potential to transform the lives of coastal communities. It will provide large-scale employment and additional incomes. To promote seaweed farming and cultivation, I propose a multi-purpose seaweed park to be established in Tamil Nadu. Migrant workers and नदियों और अन्य जल निकायों के आसपास भी one ration card scheme through which beneficiaries can claim their rations anywhere in the country. इस तरह की सुविधाएं Migrant दी workers जाएंगी. in particular benefit from the scheme. Those staying away from their families can partially claim their ration where they are stationed, while their family in their native places can claim the rest. One I am nation, happy to inform you that One Nation, One Ration Card plan is One under implementation by 32 states and union territories. राशन कार्ड योजना माइग्रेंट वर्कर्स के लिए लाई जा रही है. एक देश एक राशन कार्ड व्यवस्था की घोषणा पहले ही की जा चुकी है. The remaining 4 states and UTs will be integrated in the next few months. वन नेशन To further वन extend राशन our कार्ड efforts towards the unorganized व्यवस्था labor force, 32 राज्यों migrant में workers लागू in की जा रही है, जिससे I propose to launch a portal that will collect relevant information on gig workers, 69 करोड़ लोगों building तक and पहुंचा जा construction सकता है. workers, among others. This will help formulate health, housing, skill, insurance credit and food schemes for all migrant अगले कुछ workers. महीनों में अन्य राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को भी इस योजना के अंतर्गत लाया जाएगा. 20 years ago with the implementation of the 4 labor codes.
For the first time globally, social security benefits will be extended to gig and platform workers. माइग्रेट सैनिकों के सही आंकड़ों को माइग्रेट लेबर्स के सही आंकड़ों को ढूंढने के लिए भी सरकार एक संस्था का निर्माण कर रही है। And also in the night shifts with adequate protection. At the same time, compliance burden on employers will be reduced with a single registration and licensing and online returns. न्यूनतम वेतन सभी लेबर्स को मिले, वो भी स्थापित किया जाएगा। महिलाओं समेत सभी वर्गों के रोजगार के सृजन के लिए भी कार्य किया जा रहा है। महिलाओं को भी सभी विभागों में काम करने की अनुमति होगी। फाइनेंशियल इक्वेशन के तहत ST/SC तथा महिलाओं के लिए एक व्यवस्था को डेवलप किया जाएगा। इसके तहत मौजूदा जो 25% की व्यवस्था है उसे 15% किया जा रहा है। Honorable Speaker, sir, I now go to the fourth pillar, reinvigorating human capital. The national education policy announced recently has had good reception. In school education, more than 15,000 schools will be qualitatively strengthened to include all components of the MSME को और विकसित करने के लिए इस बजट में 15,700 करोड़ निश्चित किए गए हैं। Hand holding and mentoring other schools to achieve the ideals of policy. 100 new Sainik schools will be set up in partnership with NGOs, private schools and states. 15,000 स्कूलों का स्तर सुधारा जाएगा ताकि उसमें शिक्षा नीति के सभी अंगों को शामिल किया जा सके। Higher Education Commission in India. We would be introducing the legislation this year to implement. वहीं दूसरे स्कूलों को भी आगे बढ़ाएंगे। Umbrella body having 4 separate vehicles for standard setting, accreditation. NGOs के साथ सैनिक स्कूलों की संस्था सैनिक स्कूलों की संख्या बढ़ाई जाएगी। Institutions, universities and colleges supported by the government of India. 19-20 के बजट में हायर एजुकेशन कमीशन की व्यवस्था की गई थी। In 9 such cities, we will create a formal umbrella structure so that these institutions can have better synergy. मानक तय करने के लिए यानी रूल्स तय करने के लिए 4 शाखाएं होंगी। Internal autonomy. A glue grant will be set aside for this purpose. भारत सरकार की तरफ से चलने वाले विश्वविद्यालय और कॉलेजेस इसमें शामिल होंगे। 9 शहरों में एक बड़ा ढांचा तैयार किया जाएगा ताकि सबके बीच बेहतर तालमेल हो और उनकी आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रहे। Scheduled caste and scheduled tribes welfare. We have set ourselves a target of establishing लद्दाख में सुलभ उच्च शिक्षा के लिए एक केंद्रीय विश्वविद्यालय निर्मित किया जाएगा। I propose to increase the unit cost of each such school from 20 crores, which is what it is now, to 38 crores. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो अन्य योजनाएं हैं वो इस बजट के परिशिष्ट में शामिल हैं। Help creating robust infrastructure facilities for our tribal students. We have revamped the post-matric 750 एकलव्य मॉडल आदिवासी एरियाज में आदिवासियों के एरियाज में खोले जाएंगे। ऐसे में इनकी यूनिट लागत 38 करोड़ हो जाएगी। Till 25-26 to benefit 4 crore scheduled caste students. इससे आदिवासी बच्चों के लिए बुनियादी सुविधाएं मजबूत होंगी। Skilling. In 2016, we had launched the National Apprenticeship Promotion Scheme. केंद्रीय सहायता अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए बढ़ाई जा रही है। 35,219 करोड़ 2026 तक के लिए, जिससे 4 करोड़ अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को लाभ होगा। अब बात कौशल विकास की। Training of graduates and diploma holders in engineering. Over 3,000 crores
will be provided for this purpose. An initiative is underway, Honorable Speaker, in partnership with the United Arab Emirates to benchmark skill qualification, अप्रेंटाइज assessment and ट्रेनिंग certification, स्कीम को accompanied नया by the deployment of certified रूप दिया जाएगा, workforce. जिसके तहत We also have a collaborative training, intertraining अतिरिक्त program धनराशि की व्यवस्था between की जा रही India है and Japan to facilitate transfer of Japanese industrial and vocational skills. संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर We एक will पहल take चल रही forward है this initiative with many more countries also. जिससे कौशल प्रमाण और इस क्षेत्र में बेहतर काम Innovation and R&D. किया जा सके। In my budget speech of 2019, I had announced the National Research Foundation भारत और जापान के बीच में एक प्रशिक्षण का ज्ञान चल रहा है worked out the modalities ताकि and the जापान NRF outlay will be के लोगों में of जो 50,000 कौशल crores over 5 years. It will ensure that the नॉलेज overall है वो research भारतीयों को भी ecosystem सिखाई in जा the सके। country is इनोवेशन strengthened एंड with R&D। focus on identified national priority thrust areas. There has been a manifold in there has been a 2019 के manifold बजट में increase मैंने in एक digital payments in the recent past. नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट की घोषणा की थी। I earmarked 1,500 crores अब इसके लिए अगले 5 वर्षों के दौरान 50,000 करोड़ की व्यवस्था की जा रही है ताकि देश में अनुसंधान और विकास की प्रक्रियाओं को मजबूत किया जा सके। We will undertake a new initiative, National Language Translation हाल के Mission. महीनों में डिजिटल This will पेमेंट enable the wealth of की दिशा में government भारी and वृद्धि हुई है। policy-related उसके लिए मैं knowledge on the internet 1,500 being करोड़ made की available व्यवस्था कर in रही हूँ, major Indian languages. जिसके तहत The new भुगतान के Space डिजिटल India प्रयासों Limited, को और the मजबूती PSU, दे मिल under सके। the Department of Space will execute the PSLV CS51 एक नेशनल launch. ट्रांसलेशन We started overhauling सीमा the शुल्क customs नीति में duty घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के साथ साथ वैश्विक वैल्यू चेन में शामिल होना और बेहतर निर्यात पर जोर दिया जाना who चाहिए। responded overwhelmingly कच्चे माल की आसानी से सुलभता crowdsourcing call. और For वैल्यू suggestions on एडेड this उत्पादों का निर्यात। I now propose to review more than 400 हमने कस्टम old- ड्यूटी की जो व्यवस्था है sorry, उसमें 400 old exemptions. बहुत फेरबदल किया है। I 80 repeat, I now एग्जेम्पशन propose to पुराने हो review चुके थे more जिनकी than उपयोगिता 400 old कम थी, उन्हें exemptions खत्म कर दिया गया है। We will conduct this through extensive consultations, and from 1st October 2021, we will put in place a revised customs duty structure. पुराने free 400 of से distortions. 400 पुराने एग्जेम्पशन हैं, उनकी समीक्षा की जाएगी। 400 से अधिक एग्जेम्पशन की पहले जो छूट मिल रही थी उनकी समीक्षा की जाएगी। Following 2 इसके years लिए व्यापक from the date of विचार विमर्श किया जाएगा electronic and mobile phone industry. और 2021 से संशोधित कस्टम ड्यूटी ढांचा प्रकाशित We are किया now जाएगा। exporting items like mobiles and chargers. For greater domestic value addition, we are withdrawing a few exemptions on part of chargers and sub-parts of mobiles. Further, some parts of mobiles will Electronic move and from mobile nil phone rate industry. to a moderate 2.5%. देश के भीतर इसका उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा है। अब हम MSMEs and other मोबाइल और user चार्जर industries निर्यात करने have लगे been हैं। severely hit by a recent sharp rise in कुछ iron and छूट steel समाप्त की जा रही है। prices. Therefore, we are reducing customs duty uniformly to 7.5% मोबाइल के कुछ हिस्से on पुर्जों semis, को flats अब and long products of कर के non-alloy, दायरे में लाया alloy जाएगा। and stainless steels. To provide लोहा और relief इस्पात। to metal recyclers, mostly MSMEs, I am exempting duty on लोहा steel और इस्पात scrap for a की कीमतों period में up to 31st हाल में जो March वृद्धि हुई है 2022. उससे एमएसएमई Further, और I am also अनेक revoking क्षेत्रों को ADD काफी and CVD कठिनाई हुई है। on certain इससे निपटने steel के लिए products. मैं Also, इस पर to लगने provide वाली relief विभिन्न to copper ड्यूटियों recyclers, I'm में reducing रियायत की duty घोषणा on करती copper हूँ। scrap from 5% to 2.5%. Textiles. The textile sector generates employment and contributes significantly to the economy. There is कुछ a need to rationalize इस्पात duties on raw उत्पादों materials पर inputs एडीडी to और man-made सीबीडी को भी textiles. समाप्त We किया are जा now रहा है। bringing nylon chain
कॉपर रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने के लिए भी उपाय प्रस्ताव किए जा रहे हैं, जिसके तहत 5% की व्यवस्था को घटाकर 2% किया जा रहा है। This will help the textile industry, MSMEs, and also overall exports. टेक्सटाइल संबंधी प्रस्ताव। We have calibrated customs duty rates on chemicals to encourage domestic value addition and to remove inversions. Apart from other items, we are reducing customs duty on naphtha to 2.5% नायलॉन to यान correct से inversions. संबंधित Gold and silver presently attract डीसीडी को घटाकर 5% किया जा रहा है, जिससे नायलॉन से संबंधित टेक्सटाइल को भारी सुविधा होगी। केमिकल्स से जुड़ी व्यवस्था को भी सुधारा जा रहा है ताकि देश में केमिकल उद्योग को बढ़ावा मिल सके। गोल्ड और चांदी। To build up domestic capacity, we will notify a phased manufacturing plan for solar cells and देश में solar panels. At present, सोने और चांदी कीमतों में हाल में काफी वृद्धि हुई है। गोल्ड और सिल्वर पर सरकार ड्यूटी में कमी लाने जा रही है। There is immense potential in manufacturing heavy capital equipment domestically. We will comprehensively review the rate structure in due course. However, we are revising duty rates on certain items immediately. We propose to withdraw exemptions on tunnel boring machines. It will attract a Capital customs duty of equipments and 7.5% auto and parts. a duty of 2.5%. We are raising customs duty on certain auto parts to 15% to bring them on par with general rate on auto parts. MSME products. We are proposing certain changes to benefit MSMEs. We are पेडल increasing duty बोरिंग from मशीन 10 to पर 15% जो ड्यूटी on थी steel उसमें screws उसमें and जो plastic छूट दी गई थी window उसे ware. समाप्त किया जा On रहा है। prawn feed, इसमें we increase it from 5 कुछ to ऑटो 15%. पार्ट्स We are rationalizing exemption on import of duty free में भी items बढ़ोतरी की जा as an रही है ताकि incentive उन्हें to ऑटो exporters पार्ट्स of की ड्यूटी garments, के leather and समकक्ष लाया जा handicraft सके। items. एमएसएमई को Almost बढ़ावा देने all के of लिए these अनेक items are कदम made उठाए जा रहे domestically हैं। by our MSMEs. We are withdrawing exemption on imports of certain kinds of leathers as they are domestically produced in good प्रॉन quantity फीड पर ड्यूटी and 5% quality, से बढ़ाकर mostly by 15% MSMEs. की जा रही We है। are also raising customs duty on finished synthetic gemstones to encourage domestic processing. Agriculture products to benefit farmers. We are raising customs duty on cotton हम from nil to कुछ 10%. प्रकार के On लेदर raw पर silk and silk yarn इंपोर्ट from 10 ड्यूटी to 15%. बढ़ाने जा रहे हैं, We are also withdrawing क्योंकि इसका end-use ज्यादातर based concession on हिस्सा denatured देश में ही ethyl उत्पादित alcohol. होता है। Currently, rates are being uniformly कृषि calibrated उत्पादों की बात करें 15% किसानों के on लाभ के items लिए like maize, bran, rice bran, oil cake and कपास animal पर feed additives. कस्टम ड्यूटी 0 से There's an 10% immediate की need जा to रही है। improve agricultural infrastructure so that we produce more while also conserving and processing agricultural output efficiently. This will ensure enhanced remuneration for our farmers. To earmark resources for this purpose, I propose an agricultural infrastructure and development set on a small number of items. कृषि के However, बुनियादी while ढांचे I'm applying this को set, सुधारने की we have तात्कालिक taken आवश्यकता care है, not to put additional burden on consumers जिससे on कि most किसानों की items. आमदनी बढ़ेगी। Rationalization इसके of लिए procedures and easing of compliance. For the Agriculture, application, we propose infrastructure certain and changes in development provisioning related to से ADD, कुछ anti-dumping duty and CVD countervailing duty levies. To complete customs investigation, we are prescribing definite timelines. लेकिन In उपभोक्ताओं 2020, को we rolled out the Turant Customs किसी भी तरीके का अतिरिक्त बोझ which नहीं brought पड़ना in चाहिए। faceless, paperless and contactless customs measures. With effect from September 2020, we have implemented a new procedure for administration of rules of origin. This has helped कस्टम in putting संबंधी किसी भी जांच के लिए एक निश्चित समय सीमा होगी। तुरंत the कस्टम specific पहल जो details की of गई direct थी and पिछले indirect बजट में, tax changes proposed are listed in the annexure to my speech. सितंबर 2020-21 Honorable Speaker, sir, with these words, I 2020 commend से the budget हमने नई to this प्रक्रिया Congress अपनाई House. है, Thank you. जिससे एफटीए के गलत इस्तेमाल पर रोक लगी है। आइटम नंबर 1
माननीय मंत्री जी, आइटम नंबर 1। इसका विवरण मेरे भाषण के एनेक्शर में दिया गया है। अब मैं ये बजट सदन की अनुमति के लिए प्रस्तुत कर रही हूँ। धन्यवाद। आइटम नंबर 3, माननीय मंत्री जी। So, I wish to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003, the medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. Item number 4. So, I wish to seek your permission to move for leave to introduce the Finance Bill 2020.